Hello everyone. I hope I am audible and visible. I think I am audible and visible, right? Just let me have a quick tech check. Right. Yes, I'm properly audible and properly visible. Okay, so I think everything seems to be fine and nothing looks bad or everything seems to be good. Chalo. So without a delay, let's start with what we are having today. है ना सो शुरू करते हैं कि क्या बातें हैं क्या सीन है एंड देन वी विल हैव आवर न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन सो अगर ओवरऑल फैशन में देखूं तो आज के न्यूज़पेपर में काफी कुछ था यस फॉर एग्जांपल एक तो वो सेंट्रल स्टेट टसल जो है दैट इज बिटवीन ममता बनर्जी एंड ईडी सो ईडी वर्सेस ममता दैट इज वन ऑफ द न्यूज़ you should consider because CLAT aspirants के लिए वो जो पॉलिटिकल सोशो लीगल एस्पेक्ट होता है वो काफी हद तक क्या होता है जरूरी होता है सो वन थिंग दैट इज यू आर सपोज टू कंसीडर इज दिस देन अगेन चाचा ट्रम्प एंड हिज मैडनेस इज कंटिन्यूअस प्राइस ऑफ 500% tariff yes so this guy bought a bill in which like if you are buying Russian oil or energy supplies you are going to get 500% tariff from his side. So this is one of the thing that is happening. You remember that meme from Akshay Kumar? अरे ये तो पागल हो गया है and that looks correct on him actually. So moving on to the that particular thing कि हाँ भाई इसके कारण जो इंडिया यूएस रिलेशन है वो भी क्या होगा थोड़ा सा परेशान होगा because of the pressure of all important trade assets. Then थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो हो सकती है हैम्पर हो सकती है. Then there are government schemes, government policies जिसके ऊपर आज अपन न्यूज़ देखेंगे. फॉर एग्जांपल जो मनरेगा है राइट उसका जो रीसेंट पर्टिकुलर वो है वर्जन है दैट इज बीबीजी राम जी उसके लिए जो चीजें हुई हैं वो भी अपन देखेंगे एंड देन रेगुलेशन ऑन पेस्टिसाइड्स कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम जो एक्सटेंड हुए होते हैं रोड साइड उसके बारे में भी न्यूज़ अपने को देखने को मिलेगी देन वी गॉट अ वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर क्लैट पर्सपेक्टिव दैट इज जस्टिस वर्मा केस ऑफ करप्शन एंड इम्पीचमेंट ये अपन आज थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे ना गिव यू अ स्मॉल होमवर्क एज वेल तो वो आपको थोड़ा सा फॉलो करके आना देन जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अमित शाह जी ने बोला कि भाई थोड़ा टाइट रहो लद्दाख के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके साथ जो बातें बाकी हैं और जो लाइक लास्ट नवंबर के बाद से बातें बनती तो वो आगे होने वाली हैं वेस्ट बंगाल का आपने देख ही लिया देन सी टर्टल कंजर्वेशन चाइल्डहुड हाइपरटेंशन देयर आर सम लीगल मैटर्स फॉर दैट इसमें भी काफी कुछ न्यूज आई है सो ओवरऑल दिस वाज द न्यूज़पेपर जो क्लैट पर्सपेक्टिव से क्या है इंपॉर्टेंट है हमारा मेन फोकस जो है ना वो दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लैट एंड अदर लॉ ऑफेंसेस तो हम डील भी उसी तरीके से करेंगे है ना सो थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें फ्रंट पेज से मिला लूं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रोड एक्सीडेंट स्कीम जो मैंने बोला था कि कैशलेस ट्रीटमेंट वाला वो एक पर्टिकुलर अच्छी न्यूज़ है एंड इंडिया लाइकली टू स्क्रैप द कर्ब्स ऑन द चाइना फर्म्स जो टेंडर्स एंड बाकी सारी चीजें होती हैं दिस वाज अ गुड वन गिग इकोनॉमी में जो 10 मिनट डिलीवरी है मॉडल क्या वो सही है नहीं है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी गॉट अ बॉम्ब जिसमें यूएसए ने डिसाइड किया कि भाई साहब वो यूएनएफसीसी और ऐसा करते करते कई लाइक ऑर्गेनाइजेशन से क्या करेगा बैकआउट करेगा तो दैट इज अनदर न्यूज जो बिग लेवल पे बड़े लेवल पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है राइट सो शुरू करते हैं एक एक करके डिस्कशन करना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ओके सेम थिंग सेम स्टोरी ममता वर्सेस ईडी द वे it was Mamta versus CBI a few years back. We got Mamta versus ED. Yes. So there's this particular, what we can say, there is a political consultancy firm known as IPAC.
which is known as Indian Political Action Committee. Okay. Yes, this is a political consultation firm. For example, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ. So I decided कि मेरे पास क्या qualification है. So मुझे झूठ बोलना अच्छा आता है. I know that was a joke. So I want to serve people, right? एंड मुझे लोगों की सेवा करनी है, लोगों को देश को आगे बढ़ाना है. So I decided to contest an election, and for that I need a proper counseling, like a proper data management, proper what we can say, campaigning and other thing. So people go for such kind of political council company to do that. Yeah, right. So IPAC is one of them. That is Indian Political Action Committee. Yeah, right, in Kolkata. It's a political consultancy firm. And यहाँ पे raid पड़ी. Okay. And this raid happened in a day back. And Mamata Banerjee government in West Bengal, they are not very happy. थोड़ा थोड़ा सा वो करके देखते हैं क्या कहानी है. So Mamata Banerjee said कि they took the crucial data related to party strategy document and candidate list. ED accused her removing the key evidence during the intervention of the at the residence of the firm co-founder. सो एक्सेक्ट ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई साहब ये हमारा डेटा हमारी लिस्ट वगैरह लेके चले गए. ईडी कह रही है कि भैया जब हम को फाउंडर क्या रेड कर रहे थे तो ममता ने कुछ डॉक्यूमेंट निकाल दिया ममता जी ने. एंड अमित शाह वाज लाइक कि बीजेपी वांट्स अमित शाह जो है उन्होंने रेड ऑर्डर की है और बीजेपी वांट्स टू बुलडोज बंगाल बट द पीपल विल नो नॉट पाव. तो उनका ये कहना है कि जो बंगाल की पीपल है बंगाल के जो लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो लेट्स गेट इनटू दिस क्या इंसिडेंट है ना. So 8th of January को ED conducted a simultaneous raid on 10 different locations. Yes. In Calcutta, Delhi, including the residence of IPAC, that is Indian Political Action Committee's co-founder, Pratik Jain. Yes. So Salt Lake में उनका ऑफिस था. प्रतीक जैन जो है इनके फाउंडर थे. सो मैं नाम लिख देता हूँ. उनके यहाँ भी रेड पड़ी. And this was a raid from Enforcement Directorate, and they wanted to have some particular. They had some suspicion and data relevant to their mismanagement of fund, and that is the reason they acted and they raided. Now, Mamata Banerjee का अपना intervention था. So Mamata Banerjee का ये कहना था कि it's an kind of unprecedented move. And बंगाल की जो है ना वो है ममता बनर्जी के रेजिडेंट में जाके और मिस्टीरियस ग्रीन फाइल जो है राइट वो उनके घर में गई. एंड उसके बाद ये जो आपको ग्रीन फाइल दिख रही है ये लेते हुए बाहर आई थी. ये सो जो लोकल न्यूज है. ओके हेलो दक्ष. नो प्रॉब्लम. सो लोकल न्यूज है और अदर न्यूज चैनल उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी वेंट इनटू द दिग्विजय's house and she came out with a large green file. लोगों ने उसे नाम दे दिया मिस्टीरियस ग्रीन फाइल. There were some other documents which she claimed to be party's internal party material. So ये सारी चीजें लेते हुए वो बाहर आई थी. The allegation, ईडी का जो allegation against ममता बनर्जी वो ये है कि उनकी जो aides हैं उन्होंने forcibly remove किया physical documents को, electronic evidences को, including laptop, mobile phones वगैरह भी. And this was something which is not at all acceptable. Mamata Banerjee or TMC का same particular work, which is politically motivated and theft, right? ईडी कहना है कि this was a regular raid and जो भी चीजें हैं वो सारी कुछ है. So no, what exactly happened? भाई साहब उन्होंने एफआईआर कर दी. Yes. Uh, Yeah, जब रेट हो रही थी दैट वाज रिटन ड्यूरिंग द विजिट to Mr. Jain's residence, Miss Mamata Banerjee was accompanied by Kolkata Police Commissioner Senior Manoj Verma and other senior officials of West Bengal Police. Two FIRs were registered against the ED officials at the Shakespeare Sarani police station. Yes. One was based on suo motu complaint by the police that ED officials has not informed the local police before conducting the raid. जबकि उन्हें क्या करना चाहिए रेड कंडक्ट करने के पहले बताना चाहिए. And Mamata Banerjee decided that she will go a state-wise protest against this particular event on this day, that is 9th of January. BJP on the other half, जो opposition leader है शुभेंदु अधिकारी, he was like the chief minister is destroying evidence.
and called for strong legal action against her. So political drama is unfolding because we are going to see Bengal elections soon. तो दैट वाज दिस जो आपके साथ जो आपको जानना जरूरी था नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ट्रम्प पुल यूएस फ्रॉम द यूएनएफसीसीसी यस ट्रम्प जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उससे उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बाहर निकाल दिया और नॉट ओनली दिस लाइक देयर आर सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फॉरेन अफेयर्स में इट्स अ मेस अप पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन इंडिया इज ऑलवेज अ मेस जस्टिस वर्मा वाला केस भी अपन प्रॉपर डिस्कस करेंगे फॉर नाउ लेट्स गेट इनटू दिस यस सी आई कैन नॉट use bad languages because we are education institute but this guy technically need a proper therapist and proper education of international diplomacy yes before election he was like कि, I am the masiha of the peace मैं दुनिया भर में peace लाऊंगा now this guy is like पीस के भी ये पीस किए दे रहा है यस फर्स्ट ही लाइक ही वाज कि मैं 2-3 दिन में आते से यूक्रेन रशिया रुकवा दूंगा इट डिडंट हैपन भाई की ईगो पे चली गई देन ही स्टार्टेड लाइक टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान कि मैंने रुकवा दी इंडिया वाज लाइक कि भाई एक दो बार ठीक है तो बहुत बोल रहा है वी विल इग्नोर इट राइट एंड वी कीप ऑन इग्नोरिंग इट एंड देन इजराइल ईरान इजराइल पैलेस्टाइन देन जो सोमालीलैंड का चल रहा है वो अलग now he directly went into the Venezuelan president house in the capital, technically kidnapping him, right? And अब वो अपने गले आके उसको क्या कर रहा है? कि उसके ऊपर केस चला रहा है. So yes, this guy need a therapist and a proper education how like a state head works. Now they put a bill that will slap a 500% tariff on those nations which are buying Russian oil and energy supplies. Yes. So on 8th of January 2025, President Trump officially endorsed the Sanction of Russia Act 2025, a bill that will empower US to impose tariff to 500%, right, on countries that continues to purchase Russian oil, natural gas, uranium, and some other energy supplies. This is a bill phase, है ना? Right? Wanna be so-called JFK, रहने भाई अमेरिका में जितने भी प्रेसिडेंट हुए जितना मैंने पढ़ना शुरू किया था जितना मैं जानता हूँ ओबामा वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिप्लोमेट देन पुराने टाइम पे देयर वर सम स्ट्रॉन्ग लीडर्स लाइक रूजवेल्ट वाज देयर अब्राहम लिंकन वाज देयर राइट देन कम दिस गाय आई मीन लुक एट हिज लैंग्वेज when American forces killed Abu Bakr al-Baghdadi, he was like he was backing like a jag. So let's not discuss this guy. I don't want him. I don't want to discuss it. Let's get into some key details from the bill. है ना? सबसे पहले तो ये वही क्या कहते हैं क्या नाम था उनका सेनेटर का some Lindsey Graham, right? She was the one जिन्होंने अनाउंस किया जनवरी 8 में कि प्रेसिडेंट ट्रम्प is about to greenlight the bill of following productive meeting where he got the power to impose 500% टैरिफ राइट एंड ट्रम्प का जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने भी बताया कि जस्ट बिकॉज दिस वाज समथिंग जो कि बैड है यहाँ पे आंसर मिलना जरूरी था जस्ट बिकॉज वी पुट 50% टैरिफ ऑन इंडिया they stopped buying the Russian oil. So if we will get into the 500% scale, all the countries will stop buying the Russian oil. So इनका ये पर्टिकुलर वो कहानी एंड जो टारगेटेड नेशन है जो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी अगर बात की जाए तो जो टारगेटेड नेशन है उसमें मेजरली रशिया के एलाइज है विच आर लाइक इंडिया चाइना ब्राजील एंड द पर्पस इज क्वाइट सिंपल कि भाई जितना हो सके उतना तुम क्या करो रशियन फाइनेंसेस को क्या करो कॉपी करो यस जिससे वो यूक्रेन से बाहर आ जाए सो थोड़ा सा वो करते हैं द बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द सीनेट इन अप्रैल 2025 लास्ट ईयर
and has enough co-sponsor from the Republican Democrat parties to suggest a smooth passage once for all. राइट, और उसके बाद फिर नंबर्स दिए हुए हैं क्या कहानी है क्या नहीं. They must stop buying Russian oil. The president has only imposed tariff on 25% tariff, right, thus far, and they are telling it about India. So, what exactly the things are going to be? Under this proposed law, 500 tariff, 500% tariff जो है, right, ये automatically triggered हो जाएगा if if the president determines that Russia is refusing to negotiate, and the other countries who are aligned and who are buying Russian oil, they are helping Russia. तो वो automatically क्या हो जाएगा, trigger हो जाएगा. As of now, 9th of January, the bill has yet to be signed into a law. अभी तक ये law बना नहीं है ना? Yes, and अगर वो सीनेट के लिए वोटिंग के लिए होता है तो it can be a law. And the bill reportedly includes one of the provision that will allow president to waive off the tariff for up to 180 days, 180 days, that is like 6 months. So 180 दिन के लिए आप waive off कर सकते हो. And then वो भी if it is in national interest of USA. Yes. So अगर ये नेशनल इंटरेस्ट में है यूएसए के तो आप इसको क्या कर सकते हो, वेव ऑफ कर सकते हो, नहीं तो नहीं. नाउ ऐसी का जो एक्सपर्ट है वो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताता है. फॉर एग्जांपल मैंने लाइक सुबह नहीं रात को सोने के पहले बीबीसी का आर्टिकल पढ़ा था, इसमें उनका ये कहना था कि एक्सपर्ट वार्न्स अबाउट द 500% टैरिफ that effectively halt the export from targeted countries to the US market. In response to the growing pressure, majorly Indian refineries like Reliance and reportedly Airline began stop delivering this food. जो रशियन क्रूड ऑयल है लोगों ने लेना बंद कर दिया और उसके बदले में वी सेट बैक समथिंग जो कि यूएस इकोनॉमी को भी क्या करेगा, बैकफायर करेगा. सो दीज टैरिफ्स आर नॉट एट ऑल वेलकम. ना तो लोकल एक्सपर्ट मान रहे हैं ना बाहर के एक्सपर्ट मान रहे हैं. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वी गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट, राइट. ना ना ना, he is the guy, like I don't find him कि भाई just because he is the president of USA that doesn't mean कि we keep on discussing him. The news is to be discussed. मतलब वो आदमी तो मुझे पसंद नहीं आता. हाँ, है छोड़ो. दिल्ली कोर्ट में ऑर्डर फ्रेमिंग चार्जेस अगेंस्ट लालू यादव. Yes, Delhi court likely to be pronounced on Friday its order for framing the charges on alleged land for job scam involved with Lalu Yadav, who's RGD chief, and family members and others. So there was this particular scam this पे भी बात चल रही थी, that is land for job. So आप हमारे नाम पे जमीन दे दो, हम आपको नौकरी दे देते हैं. That was the process. And स्कैम के लिए लालू यादव एंड फैमिली जो है उनको क्या किया गया, अक्यूज बनाया गया है. सो मे बी आज उन चार्जेस के बारे में बात हो, राइट. नाउ मूविंग ऑन, जो पर्टिकुलर हुआ था उसमें वी हैव डिस्कस दिस कि भाई साहब पॉलिटिक्स कैन बी एनीथिंग, है ना. आई मीन बीजेपी एंड कांग्रेस कैन मेक एन अलायंस, बीजेपी plus AIMIM can make an alliance, and that is in local level, and the upper leadership they will like we don't even know. So उसमें और आगे बात चलिए, मेक श्योर कि भाई साहब जो भी चीजें हुई हैं बीजेपी एंड कांग्रेस ने, जो कॉर्पोरेटर्स थे जिन्होंने पावर के लिए इस तरीके से कोalition किया था उनको उन्होंने हटा दिया था, राइट. यस. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो नवी मुंबई वार्ड इलेक्शन में इलीगल रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन था उसमें स्टेज दिया हुआ, ये भी आजकल थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है. मूविंग ऑन, जस्ट अ मिनट. Now there are two, three things जो डिस्कस करने के लिए है. फॉर एग्जांपल दिस वन, सेवन बीजेपी आरएसएस वर्कर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, सेशन कोर्ट ऑफ थर्सडे सेकंड थर्सडे, सेवन बीजेपी आरएसएस वर्कर फॉर लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट for
like murder of a Communist Party of India Marxist local secretary and Central Trade Union leader K. Latish on December 31, 2008. So 2008 में लोकल एक लीडर थे सीपीआईएम मार्क्सिस्ट के जिनका असैसिनेशन किया गया था। इन 2025 में 26 में जाके लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट जो है क्या किया गया उनको अवॉर्ड किया गया। काफी डिले वाला काम था। ठीक है। Okay, that where is that news related to cashless treatment? So there are two things that is we are going to discuss in this national news section. First, cashless treatment scheme for the uh, accident victim, road accident victim. You are aware about the conditions of road in India, and you are aware about the people's awareness about the road accident and how to treat them. Because I have seen people ki road में एक accident हुआ है and they just look at it. They want to help, but they will not help because they know that they can get into some file work, police work, and other thing. So they keep ignoring it. So the government, that is the reason कि majority of accidental deaths जो है road में देखने को मिलती है. So if we get, like they get on time, what we can say, uh, medical treatment, we would have saved thousands of lives. But because of people's less awareness and their like what we can say, they are afraid of those paperwork and police questions. People don't help it. Yeah, we have seen such incident in your all of us have seen such kind of incident. कभी देखा रोड में एक्सीडेंट हो गया एंड पब्लिक डिसाइडेड कि नहीं यार छोड़ चलते हैं. So people do that. So make उसको कम करने के लिए एक कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम जो है वो लाई गई. So what exactly happened? This scheme has this particular pilot project जो कि स्टार्ट हुआ था 2025 में मई में. यस. सो ये स्टार्ट तो हो चुका था. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उन्होंने अब इसको डिसाइड किया है कि वो नेशन वाइड जो है उसको लॉन्च करेंगे. एंड दिस पर्टिकुलर केयर ड्यूरिंग द गोल्डन आवर, the scheme is formally enforced from May 5th, and it was a pilot project. So let's get into the key of aspect of this particular thing. So treatment limit, अगर मैं बात करूं, तो victim is entitled to have cashless trauma and polytrauma treatment of up to 1.5 lakh per person per accident. Yes. So if there is a car in which there are 4 5 people and they all met accident, so they will get 1.5 lakh rupees per patient per accident for the trauma and polytrauma care. Cashless, right? That's what I'm trying to say. Then there is a time limit, right? The coverage will provide maximum 7 days of treatment from the date of accident. For example, somebody has to they got injured seriously and they have to be in longer period. So 7 days तक they can cover. Now, applicability की अगर बात करें तो उसमें स्पेशली लिखा हुआ है this particular scheme is valid for the accident caused by motor vehicle of any category of road. Yes, any category of road. इसको थोड़ा सा वो करना जरूरी है, मार्क करना जरूरी है. That means even if it's a national highway, it's a state highway or a local road, अगर ये एक्सीडेंट किसी मोटर व्हीकल के थ्रू एनी कैटेगरी ऑफ रोड में हुआ है, then they will provide the cashless treatment. Right? Yes. Daily my house resides on the highway, nobody cares, on an average 7 8 per month. Yes, the problem वही है ना, we lack awareness. So the thing is, there was this incident जिसमें हम 4 5 लोग जा रहे थे, 5 लोग थे फैमिली वाले. And there was this elderly couple who met an accident और जो बुजुर्ग थे उनको काफी चोट लगी थी. एंड वी लाइक कि चलिए हम आपको ले चलते हैं आसपास कोई हॉस्पिटल जो भी होगा. चोट इन द सेंस एक्सटर्नल थी, पैर बॉडी के नीचे वाले हिस्से में थी. तो इट वाज लाइक नॉट अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बट ही वाज इन पेन. बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं ठीक है हम देख लेंगे. फिर अल्टीमेटली हमने फोन करके एम्बुलेंस बुलाया एंड वी मेक श्योर कि चीजें जो है वो ठीक रहे.
So he was into this type of hospital that covers this semi-private or private. आ रहे उसमें भी आ रहे हैं. So ये तो हो गया कि any category of road में होगा, right? Then there is a reward for those citizens जो help करेंगे ऐसे टाइम पे. So individual who will help them rushing the victim to the hospital within the golden hours may be eligible for cash award of 25,000 rupees. And जो hospital है, right? It is supposed to be implied on all hospitals under the Ayushman Bharat network. So जो eligibility है, जो requirements है वो ये कि this the beneficiary or the scheme is open to any person, Indian or foreign national, which who is injured in the road accident involving a motor vehicle. The accident must be reported to the police within the 24 hours to qualify the cashless treatment. So अगर आप गए हो हॉस्पिटल में तो वहां पे आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड हॉस्पिटल जो है राइट ट्रीटमेंट मस्ट बी काइंड ऑफ सॉट एंड देन लाइक Impel hospital all the hospitals which are like under Ayushman Bharat scheme network they are deemed to impel all like this scheme at any cost. सो आयुष्मान भारत के सारे जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल है वहां पे आपको ये चीज करनी पड़ेगी जो लास्ट 6-7 महीने से चल रहा था उसमें अगर बात करें तो जो एक ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस है जो एप्लीकेशन प्रोसेस बोल रहा हूँ जो ओवरऑल प्रोसेस है उसमें सबसे पहले जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां पे विक्टिम को पहुंचाओ राइट पुलिस एम्बुलेंस या कोई भी सिटीजन पहुंचा सकता है उनका वेरिफिकेशन हो फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो उनको अपने अंडर उसने प्लेटफॉर्म में अपडेट कर देती है through that electronic detail of extended report जिसको ईडार बोलता है राइट एंड देन उसके बाद 1.5 लाख लिमिट तक कोई चार्ज नहीं है एंड जो रिइंबर्समेंट है इन केस ऐसा कुछ होता है तो वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जो है उससे रिइंबर्स भी होता है सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हाईवे एंड रोड्स. Yes. So that scheme will help. I hope they will not make it a social media hype. Instead of they will make a proper awareness about it so that चीजें सही हो because इंडिया में रोड कंडीशंस जो हैं एंड इंडिया में जिस तरीके से लोगों का लेस अवेयरनेस रोड में लाखों लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है दैट इज समथिंग जो यहाँ से चेंज हो सकता है राइट सो इट्स अ गुड स्कीम बहुत दिन बाद एक अच्छी स्कीम आई और साथ कुछ होप देखने को मिली राइट. So, SC Raj Sabha chair role in the Justice Verma case. Anyone knows about something Justice Verma? Anyone? I'm looking into the chat box. Sahil, Daksh is here too. Yes, Daksh almost every day आ जाते हैं और दक्ष हमें काफी बातें करता है सुबह सुबह. Come on guys, if you know something, I want to see कि तुम कितना जानते हो. इलाहाबाद जज और दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली हाई कोर्ट जज सॉरी दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ. यस 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 सो लेट्स हैव अ डिस्कशन कि क्या हुआ था एक्चुअली सो अगर मैं जनवरी 2026 तक की बात करूँ इस केस में बिकॉज दैट happened way back in March 2025 so recovered the case revolves around the corruption and a landmark impeachment proceeding following the discovery of like unaccounted cash in the official residence. यस सो अभी के टाइम पे इस कहानी यही है सो मैं बात करता हूँ कि हुआ क्या दैट वाज इन मार्च 2025 ठीक है ये लोग बाहर घूम रहे थे घूमने गए थे विद फैमिली दे वर लाइक इन वेकेशन एंड देयर वाज a fire in his official residence where firefighter went over there and they discovered huge amount of
currency note, Indian currency note, in a storeroom which was burnt. Allegedly, it was the amount of 15 crore, right? Yes. And officially, like, still not confirmed. जल गए थे नोट कैसे गिनोगे so 15 crore के आसपास and uh, they were in vacation. So Justice Verma ने बोला कि at the time of fire, the judge was out of town. Like he was out of town with his five, and he has categorically like denied he has any knowledge about the cash, labeling the allegation as kind of conspiracy वगैरह वगैरह वगैरह. So जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, दिल्ली हाई कोर्ट डिसाइडेड कि हम इसका ट्रांसफर कर देते हैं. दे ट्रांसफर हिम टू द Allahabad High. Yes. Allahabad High Court was like, do we look like a trash bin whenever you get some particular judge who's corrupt, who's not performing his duty properly? You just send him to like our court. Now it makes sense why so many district judges never make it to the High Court or Supreme Court. Let's not discuss this. Right? Let's come to the point. So first, they transfer him to the Allahabad court and they relieved him the duty. And as of now, Allahabad court decided भाई हम तो कोई भी judicial work इस आदमी को appoint नहीं करने वाले. So yes, they were not at all happy. First, they had an in-house inquiry under the Chief Justice, former Chief Justice Sanjeev Khanna, right, in like for his misconduct. Later on, they have recommended the removal of this judge. Inquiry findings CJ recommended the Justice Verma resign or face impeachment. When he refused to step down, the recommendation was forwarded to the Vice President and the Prime Minister. Now, so the thing is, अच्छी चीज ये होती कि जब इन हाउस इंक्वायरी में उन्होंने बोला गया कि या तो आप रिजाइन कर दो या फिर हम आपको इम्पीच कर देंगे तो यू शुड हैव रिजाइन यस एटलीस्ट वो जो पद की गरिमा है लाइक जो अथॉरिटी एंड जो रिस्पेक्ट है वो बनी होती बट ही वाज लाइक कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर रहा सो फाइनली जब रिकमेंडेशन पहुंचा प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर तक देन दे डिसाइडेड कि इम्पीचमेंट करेंगे एंड इम्पीचमेंट का जो मोशन है वो अगस्त में हाँ 2025 में लोकसभा में जो हमारे स्पीकर है ओम बिरला he admitted an impeachment motion signed by I guess close to 150 MPs across the ruling and opposition party. Inquiry committee of three members was formed under Judge Inquiry Act 1968. ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना. Judge Inquiry Act. So inquiry is supposed to be 1968. सो जो थ्री मेंबर कमेटी है जो इंक्वायरी कमेटी बनेगी वो बनेगी अंडर बनी जज इंक्वायरी एक्ट 1968 जिसमें जस्टिस सरवन कुमार थे सुप्रीम कोर्ट के जज है जस्टिस एम श्रीवास्तव है ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट आई गेस एंड वासुदेव आचार्य ही इज अ सीनियर एडवोकेट टू फाइंड आउट द मिसकंडक्ट बाय द जज राइट सो दीज वर द थ्री पीपल कमेटी जो ये करके ये पर्टिकुलर इंक्वायरी जो है उसको लीड कर रहे थे देन मूविंग ऑन आगे क्या हुआ सो इन्होंने जस्टिस वर्मा ने जो वो है क्या कहना चाहिए इस पर्टिकुलर इंक्वायरी को इम्पीचमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया यस स्टेटिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा इंक्वायरी राइट मैं आपको सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है मैंने निकाला है नोट्स पर So he challenged the constitution of Lok Sabha Inquiry Committee, arguing that since motion were filed in both the houses, the committee should have been formed jointly by the Speaker and the Rajya Sabha Chairman. So उनका ये कहना है कि भाई साहब जब मोशन जो है वो दोनों हाउसेस में आया तो वहां पे जो लोकसभा और राज्यसभा है राइट उनके स्पीकर और जो चेयरमैन है उनके थ्रू एक कमेटी बननी चाहिए जो जॉइंटली सो दिस कमेटी इज फॉल्स इनके रिकमेंडेशन गलत हो गए if he would have resigned then it would have made all the allegations true that's why and why not try your luck in voting see it's not about
something like this. When you are, have you like read one of the story from Munshi Premchand, Panch Parmeshwar? किसी ने पढ़ी है? Anyone in the chat box? Guys, Panch Parmeshwar पढ़ी है क्या? No? एक बार वो स्टोरी पढ़ना पंच परमेश्वर की. सो द थिंग इज कि व्हेन यू आर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे आपको वो होता है क्या कहते हैं, आप एक अथॉरिटी होते हो जहाँ पे आपको जस्टिस करना होता है ना, एट दैट टाइम आपके इवन द पर्सनल ग्रेजेस, राइट, और आपके जो एथिक्स है ना, दैट इज सपोज टू बी द बेस्ट. सो होता है ये कि दो दोस्त होते हैं, उनके बीच में एक लड़ाई हो जाती है. Right. So there were two friends who get into a fight because one of them sold a bull and another bought it, but it died. उसको ये लगा कि पैसे का नुकसान हुआ. Sorry, दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है. Then one of the friends sell to one of the bull to the other person, and because of his misconduct, वो जो बैल थे वो जल्दी मर जाते हैं. तो फिर पंचायत बैठती है. In panchayat mein they were supposed to choose a panch, right, a leader of that particular panchayat who can decide who can give a justice. So the person against one friend choose that person who fought, who had a fight, who had a grudge against another person. So दो दोस्तों के बीच में एक जो है जज है अभी for now condition में, and another one is accused, right? Yes. So what exactly happened? Just because his friend is having grudges, he should give order against his friend? The answer is no. Right? उन्होंने उसने the individual, the friend who had grudges, who was in at the judge's place, he gave a fair judgment. And the friend who was accused, he shouted, "Panch Parmeshwar ki jai, Panch Parmeshwar ki jai." So when you are in that kind of field, जहाँ पे आप जज हो, आप किसी की जिंदगी का डिसीजन करने वाले, लाइक व्हेन यू आर इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यू आर गोइंग टू अफेक्ट मिलियंस ऑफ लाइफ, करोर्स ऑफ लाइफ, बिकॉज आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जजमेंट जो है ना, लाखों करोड़ों लोगों का अफेक्ट कर सकता है. तो देन एट दैट टाइम यू आर सपोज टू बी प्योर, एंड उस पे जो हमारा ट्रस्ट है ना जुडिशरी पे, वो हमें बना रहना चाहिए. राइट. यस. एंड दिस गाय वाज समथिंग जिसने थोड़ा सा ट्रस्ट को परेशान किया है. Right? So yes, this was the current situation. For now, जो Supreme Court है, right? They have reserved its verdict on the Justice Verma's challenging plea, the legality of the Lok Sabha panel. During the hearing, court noted some infirmity is there in some particular thing as there, but ठीक है, अभी जब आएगा जजमेंट तब अपन उस पर बात करेंगे. बट दिस वाज समथिंग. नहीं, डेफिनेटली आप उस जगह पे होते हो ना कि आप नहीं वो कर सकते हो. तो क्या, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज. दिस इज अनदर गुड न्यूज जो आई है. द गवर्नमेंट सीक्स फीडबैक, राइट, on the draft bill to regulate pesticide to promote safe and effective use. Yes, agriculture ministry जो है, union agriculture ministry, they have invited the public comment for the draft of a pesticide management bill, and that is going to like repeal the Insecticides Act of 1968. This is something that is good, क्योंकि पेस्टिसाइड्स के थ्रू क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं. लाइक इफ यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर एंड सेफ यूज, it's going to affect a lot of things, whether that is people who are consuming those agricultural products, the person who are doing agriculture, and the land and the natural resources who's consuming that chemical as well. So जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो बायोलॉजिकल ओरिजिन है पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए, उसको प्रमोट करना, राइट. जो सब्सटेंस पेस्टिसाइड होगा उसको एक प्रॉपर डेफिनेशन के अंडर लेके आना, क्या ऑपरेशन होने चाहिए पेस्ट कंट्रोल के या दूसरी चीजों के, इन सबको रेगुलेट करने के लिए दे आर आस्किंग फॉर फीडबैक फ्रॉम द पीपल, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द
बेस्ट बिल जो अभी रिसेंट टाइम पे आया है. Then again, Amit Shah like urged agencies to remain alert at Jammu Kashmir after the security review meet, right? वो रेगुलर होता है. जम्मू कश्मीर इज आफ्टर लाइक पहलगाम बिकम्स वन ऑफ द हॉटस्पॉट, सो वो सारी चीजें रेगुलर रहती है. अब अगेन ममता बनर्जी हिट्स द स्ट्रीट, राइट, फॉर द, यस, बहुत सारी एग्रीकल्चर में दक्ष बहुत सारा रिफॉर्म करने की जरूरत है. पीपल एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड दैट एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंटायर कंट्री. तो अगर एग्रीकल्चर में एक मेजर पॉजिटिव रिफॉर्म्स होते हैं तो देयर आर गोइंग टू बी 70-80% पीपल हु आर डायरेक्टली going to be affected positively. So it's such a good thing. राइट. सो वही ममता बनर्जी ईडी के अगेंस्ट भैया आज वो करने वाली है. और फिर महाराष्ट्र जो ठाकरे कजन्स हैं दे वर लाइक कि महाराष्ट्र में पावर का मिसयूज हो रहा है, लोकल बॉडीज में जो नॉमिनेशन कैंसिल हो रहे हैं दूसरी चीजों के लिए. एंड अपोजिशन जो है वो ईडी के अगेंस्ट जो एक्शंस है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रही है ममता बनर्जी की. वी हैड ऑलरेडी दिस डिस्कशन. सो हम अब आगे बढ़ते हैं. Now, there are two particular things. First, the Congress demanded a clarification on the deaths in Indore in terms of collective failure of government. So, Indore ke Bhagirathpura area mein, like close to 20 people died because of like water contamination, contaminated water, right? So, Congress उस पे क्या कर रही है? Collective failure और clarification चाह रही है. And then Congress flagged growing turbulence in India-US relation. And India-US तो परेशान है. And thanks to like Chacha Trump, like India और US के relation I guess all time low पे है. We had already this discussion कि ट्रम्प किस तरीके से परेशान कर सकता है. So ये है ना. मूविंग ऑन टू द नेशनल न्यूज के बाद अपन जाते हैं थोड़ा सा साइंस में. कुछ खास नहीं था, मैंने पढ़ा तो था. एंड ये एक वो था इन द सीजन ऑफ स्नीज कफ सो थॉट स्नेबल्स एंड स्नॉटी नोज देयर आर सम क्विज टू टेस्ट योर नॉलेज विद द विंटर इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग. सो इसमें कुछ अच्छी चीजें थी, क्वेश्चन के बाद आंसर्स भी हैं कि क्या कंज्यूम करना चाहिए. तो इफ यू आर इनटू दिस मेक श्योर कि पढ़ लेना. सो मूविंग ऑन. आज के एडिटोरियल में सबसे पहले तो ये है कि भाई तो जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, राइट, दे नीड टू हैव लीगल चेंजेस. यस, दिस इज अ गुड एडिटोरियल. मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है कि पीपल हु आर मेकिंग फेक मेडिसिन और रॉन्ग मेडिसिन, राइट, दे डोंट हैव लाइक वी डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोविजन जिसके कारण परेशानी मतलब जिसके कारण लोगों को परेशानी हुई, लोगों की डेथ हुई है. सो लाइक पीपल कैन गेट आउट ऑफ इट इन 3 मंथ बाय पेइंग सम अमाउंट. सो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में ये बात की है कि जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन किया जाए एंड वी शुड एक्चुअली गेट स्ट्रॉन्ग नाउ, राइट. व्हेन डू यू रीड दिस? आई रीड इट लाइक अर्ली मॉर्निंग आई गेस. आई स्टार्टेड रीडिंग एट 5:45 6. No, what's bad in that? सुबह सुबह उठ के न्यूज़ पढ़ना, राइट. सो यस, इट्स अ डिमांड फ्रॉम लाइक लास्ट 1 साल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल इंदौर में जो अभी हुआ वो गलत पानी एंड ऑन टाइम ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से हुआ. फिर MP में कफ सिरप जो था, राइट, कफ सिरप के थ्रू आई गेस 30 चिल्ड्रंस की डेथ हुई. यूपी में हुई. देर आर सम अदर प्लेसेस जहाँ पे हुई एंड इवन इंटरनेशनली भी हमें काफी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि हमारे मेडिसिन के कारण अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी कुछ कंट्रीज में ये चीज हुई. तो फेक मेडिसिन, रॉन्ग मेडिसिन और उनके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ा सा स्ट्रांग होने चाहिए. दिस पीपल यू लूज देयर व्हाट वी कैन से लव्ड वन. तो यस, मेरे हिसाब से तो इसमें होना चाहिए. इट्स अ गुड एडिटोरियल पढ़ना. Moving on to the gig economy, yes, is the 10-minute delivery model is necessary. Uh, in January, like New Year, a new debate is sparked. और इसमें बहुत सारे वीडियोस आए, बहुत सारे एनालिसिस आए. देयर वर टन्स ऑफ पीपल जिन्होंने बात की क्या कैसा है. सो देयर इज एन इकोनॉमी जिसको आप गिग वर्कर इकोनॉमी कहते हैं, राइट. एंड दीज लाइक ये वो लोग हैं which are not at all a full time employee
and they are working as part-time employee kind of thing. Part-time वो भी some for extra income. For example, एक किसी फूड है ना एप्लीकेशन है, होम डिलीवरी का एप्लीकेशन, उसमें जो डिलीवरी बॉय होगा या ग्रोसरी डिलीवरी का है, उसमें होगा, तो दे आर डिमांडिंग सम सॉर्ट ऑफ regularization in their field. Come on, if somebody has to deliver goods within the 10 minutes and if jaldbazi mein he meets an accident, then what then now? Right? So, how they are going to treat? So, जो Zomato के co-founder हैं, उनके ट्वीट से ये बहस शुरू हुई and that is continuous. How we actually should regulate. Now, the founders of different what we can say startups and such kind of apps, they don't want regulatory authorities to intervene their business policies. And that's why they are giving clarification कि भाई हम तो बहुत अच्छा करते हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो पार्ट टाइम करते हैं अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, and gig workers they are demanding it because they need a proper employment kind of thing. राइट, सो एक मिनिमम वेज पर डिलीवरी एंड ऐसी पर्टिकुलर चीजों की डिमांड जो है चल रही, इट वाज अ गुड इंटरव्यू, ट्राई टू रीड इट, वाज गुड। रेबीज वैक्सीन होप्स, हाँ हाँ, हर जगह चल रहा है ये, हर जगह चल रहा है, यू राइट। नहीं, नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट, लाइक पीपल, अभी मेरे एक दोस्त से मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो वन ऑफ लाइक इस आइडिया वाज कि भाई अगर कोई एक रेगुलर जॉब में पार्ट टाइम इनकम कर के लिए कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? And I asked him one particular thing, if he doesn't have a regular job, what then? Right? So yes, so there are tons of question. I think there should be a proper talk on this. Let's hope for the best. And text in context में तो कुछ नहीं था, इसरो से related कुछ चीजें थी जिसमें इसरो के new missions, whether that is शुक्रयान, yeah, right, whether that is Mangalyaan expert Chandrayaan, right, then this particular Gaganyaan, in which we are going to send astronauts to the what we can say space. So there are some particular new challenges and new projects which ISRO is facing, and it has a detailed discussion on this. पढ़ना अच्छा है. Then I read this editorial. मुझे Avatar series बहुत पसंद है. So this was one of my first experience जब मैंने एक फॉरेन फिल्म इंग्लिश में देखी थी पहली बार. यस, होता है होता है, राइट. सो आई एम अ फैन ऑफ अवतार सीरीज. फार एंड हैश मुझे बहुत अच्छी तो नहीं लगी, राइट, बट इट हैज सम पर्टिकुलर प्रोज एंड कॉन्स. मुझे स्टोरी वाइज वो थोड़ा सा उसमें भी वो लगा. तो अगर आप सिनेफाइल हैं, है ना, अगर आप सिनेमा को समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो. मूविंग ऑन टू द बिजनेस न्यूज. सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर लाइंस के जो अडॉप्शंस है उसको इंडिया कंटिन्यू करना चाहती है, एंड यूएस जो है, इन्होंने यूएसए अंडर द ट्रम्प लीडरशिप, heard that meme, वाह एमपी वाह. why I am like कल से जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है वेनेजुएला के बाद से, लाइक वाह ट्रम्पी वाह. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन. सो ही डिसाइडेड कि हम इंटरनेशनल सोलर लाइन से भी बैक कर देंगे. आई मीन, this was one of the organization which was helping spreading technology and awareness about the solar energy all over the world. And this guy was like, no, we are coming out of it. So international solar lines क्या है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं. So ISO, sorry, is an action-oriented treaty-based intergovernmental organization. It was launched in 2015, है ना, by India and France combined. सो जहाँ पे भी सोलर रिच रीजन्स हैं, वहाँ पे सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए, टेक्निकल हेल्प, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस के लिए, इन सब के लिए बात करते हैं ये. ऑब्जेक्टिव इज सिंपल, टू promote majority of renewable energy. And उसमें भी हमारे पास when we are having such kind of strong source like sun, तो उसको ज्यादा वो करें. And they have some key initiative like One Sun, One World, One Grid, OS1.
राइट, जिसमें एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका, इनके सोलर रिच रीजन जो है वो 24/7 क्रॉस बॉर्डर सोलर एक्सेस जो है, सोलर पावर एक्सचेंज जो है उस पे काम करें. सनराइज नेटवर्क इज देयर, स्टारसी नेटवर्क इज देयर. सो दीज आर सम इनिशिएटिव जो अच्छे थे. बट चाचा ट्रम्प को वो भी पसंद नहीं आया. ही वाज लाइक, नो नो नो, वी आर गोइंग टू use that money of donation to the common people. So ये है. Daksh, there are consequences to the US action. But होता ये है कि when you are having, like, when we see a strong person doing some bad thing, we directly do not say anything. Like एक अगर simply there is a mad dog who's barking, you don't bark back, right? You just wait for the correct time. और वो पब्लिक कर रही है. China is doing its own work. India is, तुमको लग रहा है इंडियन गवर्नमेंट खाली बैठी होगी जब ये कुछ भी बक देता है. We are having our backdoor plans and other things. So we are not going to see it like a very easily. So it's going to have what we can say consequences for him as well and for the local economy as well. Right? So yes, वो है. Market gets mount on the SC waves of Trump power. ये तो चल ही रहा है. इसके कारण बहुत परेशान है public. Let's have this. Right? This is something that we have to uh, yes, we should discuss. So, U.S. government unveiled plans to control Venezuela's oil sales indefinitely. अब सोचो, ये आदमी पहले कह रहा था कि वी आर गोइंग टू हैव अ कॉम्पनसेशन फॉर 30 to 50 million barrel, राइट, ऑफ ऑयल, जो भी हमारा नुकसान हुआ है. एंड सडनली ही वाज लाइक कि नो नो नो, हम इनडेफिनेटली क्या करेंगे, वेनेजुएला की ऑयल सेल्स को कंट्रोल करेंगे. So that is how you can see his negative intentions. And once our vice prime minister said this, hypocrisy की भी सीमा होती है, and this is what the सीमा is. And we had already discussed this कि भैया ट्रम्प जो है वो यूएनएफसीसीसी से वो कर चुका है, विड्रॉ कर चुका है. There are some other organizations as well जिससे विड्रॉ कर चुका है. ढाका ने इंडिया की सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है. तुम्हें पता है बांग्लादेश और ढाका के बीच में क्या चल रहा है. Ah, this is something we should actually discuss. The last Russia-US nuclear treaty is about to expire 5th of February. What happened next? Yes, so just start here. That is Strategic Arms Reduction Treaty. That is the name. क्या नाम है इसका? ST, sorry, ART. Strategic Arms Reduction Treaty. है ना? This is actually the final, what we can say, nuclear arm treaty kind of thing. A nuclear arm control agreement, arms control agreement between US and Russia. And that is going to be expire on, I guess, February, starting 5th of Feb. उसके बाद क्या होगा? क्या ये भाई लोग नई ट्रीटी साइन करेंगे? All memes were just meme. No, भाई, all memes are not memes. My grandfather used to say कि जहाँ पे भी ऑयल होता है, तेल होता है, तो डोनाल्ड ट्रम्प वहां पे पहुंच जाता है डेमोक्रेसी बचाने और लोगों का तेल निकाल के चला आता है. अरे, अमेरिका टेक्निकली. So what is like on the 7th of January, Donald Trump indicate that he might allow the treaty to expire. Yes, if it expires, it expires. That was his statement. And better agreement. He is in the need of a better agreement, and that is not just with China, Russia, but also with China. Yes, because it's becoming a proper threat. तो रशिया जो है उन्होंने सितंबर 2025 में पुतिन ने प्रपोज किया था कि हम इसको 12 महीने के लिए एक्सटेंड कर देते हैं जब ये मिले थे. सो पुतिन ने 12 मंथ एक्सटेंशन प्लान किया था, बट ही इज नॉट एट ऑल एग्री विद दिस. एंड रशिया ने फॉर्मली वो पहले सस्पेंड कर दिया था जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था, राइट. तो इसको कोई खास वो नहीं है. मूविंग ऑन द अदर ट्रीटीज, अगर मैं ट्रीटी की लिमिट्स की बात करूं तो ट्रीटीज के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस कि 1550 डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड जो है ना, दे वर द ओनली वन जो होंगे.
700 deploy nuclear, sorry, strategic delivery system, whether that is ICBMs, SLBMs, or heavy bombers, southern नहीं बढ़ सकते. And 800 total deployed and non-deployed launches. That's it. ABM treaty जो 72 में आई थी, that was the beginning of such kind of treaty. जब वो न्यू like जो अब रिसेंटली जाके एंड हो गया, उसके बाद फिर अदर्स आई, इंफर्मेटरी आई, स्टार्ट वन आई, सॉर्ट आई, फिर उसका स्टार्ट टू आई. फॉर नाउ दिस इज completely up to Trump and Putin कि क्या करेंगे. For now, Russia is having maximum number of active nuclear warhead, I guess, close to 5600. Right? Next to अगर यूएस की बात करें, so that was Russia, 5600, 5200 के आसपास शायद यूएस के भाई भी पास है. एंड चाइना उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है. So they are having 600 प्लस, एंड एक्सपेक्टेडली वो 1000 प्लस हो जाएंगे बाय 2030. तो यूएस का जो पर्टिकुलर परसेप्शन है वो ये है कि एक ऐसी न्यूक्लियर ट्रीटी वाली डील बनाई जाए जिसमें यूएस, चाइना, रशिया तीनों हो. यस. हाँ. तो ये एक पर्टिकुलर कहानी है जिसको अपने को वो करना चाहिए कि किस तरीके से होता है. सो 5 फरवरी को दैट स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी जो है वो एक्सपायर हो जाएगी. ट्रम्प वाज लाइक इट एक्सपायर, इट एक्सपायर्स, एंड ही इज इन पोजीशन जहाँ पे वो सोच रहा है कि हमें एक बेटर ट्रीटी मिल सकती है. सो दैट वाज समथिंग जो कि उसका एक मोटिव था. Now, Somalia fight against extremist militant shows sign of success in the Mogadishu. So, जो सोमालीलैंड, सोमालिया, इसराइल की इंटरवेंशन है, इन सारी चीजों पे ये आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल है. एक बार इसको प्रॉपर पढ़ना है ना. एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसको, नेक्स्ट जो सेशन होगा नेक्स्ट उसमें इसका प्रॉपर ओरिजिन से लेके और अभी तक का क्या इवेंट्स हुए हैं, इन सब पे अपन एक डिटेल बात करेंगे. क्योंकि दिस इज समथिंग जो कि कहीं ना कहीं अफ्रीका के लिए, सेंट्रल अफ्रीका और ईस्टर्न अफ्रीका के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. मूविंग ऑन, स्पोर्ट्स में कुछ खास था नहीं. मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं मिला. बट ओवरऑल फैशन में दिस वाज the major the Hindu analysis for the law perspective, right? And these were the major news. And I need some suggestion, proper suggestion on this. Right? We are planning कि हम like from the next session, we are not planning, we have decided. From the next session, we are going to have a 15 or 20 question marathon after every paper analysis. So first we will deal with the newspaper, right? Then we will discuss 15 to 20 questions uh, which are relative, which are like important, or which you can say are concentrated or centric toward the law entrance test. So I might like pattern के लिए जो मैंने सोचा है वो ये है कि हम एक पैसेज उठाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और पैसेज के बेसिस पे 5-7 क्वेश्चंस रखेंगे. देन वी विल हैव रेस्ट एज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट लाइक स्लैट, एमएससीटी वगैरह में आता है. सो मेक श्योर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी आर आल्सो गोइंग टू हैव अ क्विज, राइट? And again, I will definitely tell you the right answers, and I will not give you any gift. हाँ, but अगर कभी ऐसा मौका मिला कि हम मिलिए इंदौर में, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे रेगुलर उसमें, तो मैं आपको चाय पिला सकता हूँ. राइट? Okay, can you bring the MCQ to Daksh Abhi? अच्छा, that's what I'm saying. Okay. नहीं है वो जरूरत है. लाइक टेलीग्राम में आई कंटिन्यूअसली डिस्कस विद द स्टूडेंट, एंड आई आल्सो लाइक आई एम आल्सो पार्ट ऑफ दोस प्लेटफॉर्म जो रेडिट वगैरह में, दूसरी वो में, तो वहां पे लोग ऐसी डिमांड करते हैं. सो हम आपकी डिमांड सुनते हैं और हम आपके वो करते हैं. वी आर नॉट बिहेविंग लाइक गवर्नमेंट्स, वी बिहेव लाइक कॉमन, लाइक एजुकेटेड पीपल. So this is it from my side for today. I hope you guys enjoyed the session, and I'll see you in the next. Definitely, Daksh. We'll handle it. So I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. Life में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो, and I'll see you in the next session. Good day, guys. See you.